हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बंजारे शेफ। आज हम बना रहे हैं बेक्ड मैक एंड चीज़ पास्ता। ये एक क्लासिक क्विक मील है जो ख़ास तौर पर बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ये क्रीमी चीज़ी होममेड पास्ता पूरी फैमिली में भी ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की एक फेवरेट डिश है। अब वेकेशंस में किड्स ने ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखी और बनाई भी। तो चलिए आज हम उन्हीं के साथ और उन्हीं के हाथों ये डिश कैसे बनती है ये सीखते हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। Today we're going to be making mac and cheese. You need around 350 grams of pasta, some bread chunks, some garlic cloves, 50 grams of butter, 50 grams of Parmesan, 250 grams of cheddar cheese, 3 tablespoons of plain flour, tablespoon mustard powder, 500 ml whole milk. First we will boil the pasta. Spread the bread chunks over the baking sheet and drizzle with oil or melted butter. Set to 180 degrees for 6 minutes. Heat a saucepan and add 3 tablespoons of butter. Add 2 chopped garlic cloves and 1 teaspoon of mustard powder. Stir and then let it cook for 1 minute. Now add 3 tablespoons of flour. Stir and then leave for another minute. Now slowly add the milk. Now our pasta is done. Now sieve the pasta. Add half a teaspoon of salt. Now add in your cheese and Parmesan. Now mix. Stir until now add the pasta into the cheese mix. Mix until the pasta is fully cooked. Bread should be ready now. Make sure to turn on your oven to 200 or 180 degrees without fan. Also, sprinkle a little bit of cheese on top of the dish. Take out the bread and place it on your final touch is you can see it garnet under. Spray it with oil. Ready to take out.
Now the mac and cheese is ready and ready to be served. Now the mac and cheese is done and ready to serve.